Inshallah, we will do the entire summary. So हमने जो अभी तक पढ़ा है, हमने of course फ़ेल, ism और harfs. So let's start very high level with the ism. ठीक है? I'm trying to create an outline of what we have done with ism. ठीक है? ताकि आप लोगों के माइंड में हर चीज कंसोलिडेट हो जाए. ठीक है? So let's start with the ism. In the world of ism, now try to answer this question. What can an ism be? What can an ism be? I mean, I'm not going to that level कि जब हम कहें कि जी ism के status क्या होते हैं, रफा नसब जर. I think that's pretty Name, place, idea. Name of a place, person, idea. Even better than that. That's basic. That's ABC. What I'm looking for, you are telling me कि ism, for example, can be a mubtada. Okay. That's the level I'm after. Ism can be a mubtada. ठीक है? What else can ism be? Khabar. Ism can be a khabar. What else? Idaf ilay. Idafa. Mudaf ilay. Mudaf. Then we have the property, the two properties that are matching. Ism can be a mawsuf. Mawsuf sifa. It can be a sifa. What else can it be? Harf Harf of jar or harf of nasab and harf of jar. Ism can be a harf of jar. No. Yes. No. 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 It is Ism mansoob. is in jar state. So what do we call that ism? Yeah, majroor, jar, majroor, Majroor. and mansoob as well. Majroor and mansoob. What was mansoob? Nasab, word after nasab. When the ism is in nasab. Nasab Basically, state. it is mansoob. हम उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम उसको कहते हैं ism of inna, for example. Ism of inna कहा करते थे हम उसको. हम उनको मंसूब कह देते हैं. For example, this is a harf of nasab case. ठीक है? Majroor is a harf of jar case. I'll put it like this. ठीक है? Anything else can ism be? Shall we say this kana as well, because the fail was actually an ism of kana. So can we write it that as well? Because the inherent characteristic of kana is a fail. It's actually a fail inherently, na? It is a fail, yeah. It is treated as ism. That's a separate story. But I'm after specifically ism. What about in relationship to the fails? What can ism be? Fi mahalli kuch. Fi mahalli rafa, fi mahalli nasab. मतलब होता है in place of. ठीक है? Fi mahalli rafa in place of rafa. Fi mahalli nasab in place of nasab. It's a mawsool. It could be. नहीं, could be file as well. It could be file as well. हमने पढ़ा नहीं है. हमने Ism पढ़ा नहीं है. mawsool. Mawsool, yes, but I read it. Ism can be an ism mawsool, of course. What else is a ism? Imagine a jumla fi'liya. ठीक है? Fragment. Find what is File. the. It can be a file. ठीक है? Can be a file. What else? Maf'ul. Can be a Maf'ul. maf'ul. ठीक है? मुताल्लिक बिल खबर. मुताल्लिक बिल खबर तो पूरा फ्रेगमेंट होता है. हाँ, ये भी बात है, पर उसके अंदर फेल तो आता है उसके आगे. पर मजरूर हो गया. Special mudaf can be an ism. Yes. Right? Special mudaf is an ism. ठीक है? और कुछ आ रहा है जहन में? नोट्स देख लो. नहीं बूटी नहीं चलानी ना. मजाक कर. माइंड से करेंगे. This will inshallah firm up in your mind. ठीक है? ये सब चीजें करनी है. What about any further fragment? Have we covered everything? Zalika, tilka, pointer. Pointers are isms, right? Yes. Pointers and इसको कैसे मैं लिखूं? इसम इशारा basically. इसम इशारा and musharun ilay. The fragment of pointers, pointer fragment.
basically उसमें जो point of view. Pronouns will be considered as ism as well. Pronouns. Actually, good point. Pronouns. ठीक है, regardless being attached or independent, they are all isms. ठीक है ना, ism can be all of this. Right? Now, let's stop here. Mubtada. When ism is mubtada, what are its characteristics? It's always in rafa state. Always rafa. Always rafa? Yes. Nahi. Mubtada can always be different things as well. It has 5 or 6 different properties. वो भी बताओ. Maslan, proper noun, proper followed by common, pointer words, pronouns. Break and chain. Break and chain. हाँ, ये तो वो टेक्निक्स है जिससे आप इनविजिबल इज फाइंड करके आप मुब्तदा डिटेक्ट कर लेते हैं, राइट? But once the ism is mubtada, the word before the is it always rafa, or there can be a case when it is not rafa? इसी लिस्ट के अंदर आपका आंसर मौजूद है. हमने पढ़ा था उसके अंदर कि जब वो नसब कई दफा सी पहले आ जाता है. नहीं, don't go there. Let's try to list down what are the reasons an ism can be what. नहीं, जब वो होता है हर्फ ऑफ नसब होता है तो फिर वो रफा नहीं होता. Correct. In case of harf of nasab, mubtada is nasab, right? Because after harf of nasab is an is. ठीक हो गया? समझ आ गया था ना? हर्फ ऑफ नसब. कोई मिसाल दे दें फहद भाई प्लीज. कोई मिसाल दे, मुझे ये क्लिक नहीं कर रहा. हर्फ ऑफ, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ नसब when with harf of nasab. ठीक है, इसकी मिसाल ये है. oh yes, inna Allah, right? And then you have invisible is after, right? ये भी उन 5 मेथड में से एक मेथड था ना मुब्तदा के जब स्टार्ट. This is the only way. This is the only thing when mubtada is not rafa. Otherwise, mubtada is always rafa. Right. Okay. Now, what else do you know about mubtada? It can be pointer words. Mubtada can come after delayed mubtada. Can mubtada be common? Yes. Yes. Yeah, mubtada can be common or proper. ठीक है? What is the standard mubtada? Common or proper? Proper. Standard mubtada is proper. Yeah. If it's common, then it's delayed. If it is common, then when it is common, it is delayed. When it is common, it is delayed. Now again, is it when it is common and it is delayed, is it considered standard or abnormal? It is an abnormal structure, but it is always considered as a standard. ये तो conflict हो गया. Abnormal और standard एक साथ नहीं चलेगा ना? नहीं, हमने क्या था, हमने इसी तरह की एक स्टेटमेंट पर लिखी थी. हमने कहा था कि उसको ट्रीट हम जो है वो abnormal तरीके से किया जाता है. But apparently look abnormal. हाँ. When you look at it, it's abnormal, but it's treated as standard mubtada. ठीक है? So when it is common, it is delayed, but treated as standard mubtada. Right? Yes. Correct? Right. So what is an abnormal mubtada? Abnormal mubtada. Abnormal mubtada. यहाँ क्या होता है? हमें पता है. Let's go from what we know. So we know as standard mubtada is proper. ठीक है? Let's do it like this. Instead of asking you this question,
let's talk about sequencing of Jumla Ismiya. Okay, let's talk about this. We know the proper Mubtada is a standard Mubtada. Now, what is this correct structure of the standard Mubtada? ABC. It's A, B, and C. Where A is Mubtada. Do you want me to write it fully? Mubtada. Khabar. And then Muta'alliq bil khabar. Okay, that's the standard structure. Now, in this standard structure, the Mubtada, which is A, is proper. Okay, or delayed common. With me? yes. Standard structure के अंदर. Now this is a standard structure, standard sequence structure of sentence of Jumla Ismiya. This is what we are talking about. ठीक है? इसके अंदर ये केस होता है. Now what happens that this structure becomes abnormal structure? When Muta'alliq bil khabar come first and it becomes CAB or Abnormal structure of Jumla Ismiya when, let's say, MBK comes first. या इसको इस तरह लिख देता हूँ. Proper Mubtada is delayed. ठीक है? Proper Mubtada. वो ज़्यादा बेहतर है. Or you can just say /MBK come first, then Mubtada. चलो यूं कह देते हैं. MBK comes before Mubtada. ठीक है? इसको मैं इस तरह लिखूं. MBK / खबर. Yes. Comes before Mubtada. ठीक है? That is, in fact, comes before proper Mubtada. That's what makes it abnormal. Right? Correct. All of this is what you know about Mubtada only. It's somewhere in your minds, but it's all jumbled up. Okay? The objective of this class is to bring it together. ठीक है? एक आप cohesiveness build करनी है आपने अपने mind में आज के collect हो जाए आपके पास ये सारी information. You need this. ठीक है? चले. Let's talk about the khabar. What do you know about khabar? Khabar is always rafa. Always rafa. Can be proper, can be common. So what is the default? Khabar common. As standard, the khabar is common. Only in special cases khabar becomes proper. Okay? In special cases, it can be proper. Okay? Now, can khabar be anything other than rafa? या फी माली रफा हो सकता है अगर हम उसको उस तरह पढ़े. फेल भी हो सकता है, उसकी जगह आ सकता है. Can be a fragment. Can we say can be replaced by any other, can be replaced by fail or fragment or. That's exactly what I'm saying. It's not replaced, it's represented. Okay. Can be इसको इस तरह लिखते हैं. Can be present as a fragment or a sentence. Yeah. So when present as a sentence, it is fi mahalli. ठीक है? Fi mahalli rafa. In place of rafa, which means in place of rafa.
जब खबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एज अ स्टैंडर्ड इसम और अ फ्रैगमेंट, लेकिन आ जाए सेंटेंस, चाहे वो फेल बेस्ड सेंटेंस हो या कुछ और हो, you say it is in place of the khabar, in place of the rafa that was supposed to be the khabar, but now we have a sentence. Okay, that's what we say. Now, is there a case where khabar can be other than rafa, like nasb? स्पेशल केसेस में हो सकता है। I कौन सा think there है में कोई? Khabar can be nasab when the mubtada is, complete करें sentence को. when the mubtada is delayed. No. पिछली क्लास याद करें. हर्फ Is ऑफ common, is nasab common, बात करना, It's common. When the is common. No. हर्फ ऑफ नसब से रिलेटेड ही है कुछ। When is harf of nasab? No. नहीं, वो तो फिर मुब्तदा होता है। हाँ. अगर पिछली क्लास समझ आई आपको, खबर is nasab फेल इसम ऑफ फेल when when the is weak fail. when the mubtada is when the mubtada is a weak fail, a weak fail. For example, kana plus its ism. फहद भाई कोई मिसाल देंगे प्लीज कुरान शरीफ से? Let's see. For example, Innahu kana ghafurun wadudun. कुरान से देने के बजाय मैं आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूं. मैं आपसे कहता हूं काना मुस्लिमन. ठीक है. Now kana is a fi'l, right? And it has a huwa inside it. And it's a weak fi'l. When you have a weak fi'l, the kana plus its ism is labeled as mubtada. Now, of course, because it's a fi'l, it is going to follow the patterns of jumla fi'liya. In jumla fi'liya, you don't have a khabar. You have a maf'ul. So the next ism, kana, can only detect maf'ul in nasb. But because it's a weak fi'l, we label this sentence as a jumla ismiya labeling. Okay? So when you have, Musliman was supposed to be a maf'ul of kana, but because it is treated as jumla ismiya, this Musliman is going to be the khabar. Okay? This is the khabar. So this is the case when a khabar can be nasb, because it is a khabar of a sentence where the mubtada is a weak fi'l. ये हमने last इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी फहद भाई? He was a Muslim. Shams bhai, kana is basically he was ठीक है? ये past tense में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है जी जी. So I'm just trying to he आपको ट्रांसलेशन लिखना चाह रहा हूँ इधर वर्ड के अंदर. देखिए मेरे लिए ना लिखे, समझ में आ गया. ये बहुत ही बेसिक और मेरे ख्याल से मेरा डम क्वेश्चन है, फहद भाई नाराज मत होइएगा, लेकिन ये मुस्लिमन में अलिफ के बाद आपने मतलब अलिफ क्यों ऐड किया है? सिर्फ ये मीम के ऊपर हो क्यों नहीं है? शम्स भाई आपको याद होगा बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में हमने पढ़ा था कि सिंगुलर नसब व्हेन यू पुट द फतहतैन, द डबल एक्सेंट, इट मस्ट ऑलवेज गो ऑन द अलिफ. गॉट इट, याद आ गया. ठीक है, बिल्कुल याद आ गया. ठीक है. सो दिस इज द केस कि जब खबर एक नसब फॉर्म ले सकती है बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ अ जुमला इस्मिया दैट इज ड्रिवन बाय अ मुब्तदा एज अ वीक फेल. ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. Because in Arabic language, you have ways to say he is a Muslim, but you don't have ways to say he was a Muslim. Okay? He is a Muslim is huwa muslimun, normal structure. But when you want to replace this is with a was,
there is only one word which is a fail, meaning he was. And because of that, this entire principle comes of jumla ismiya based out of the weak fails. Okay? That is khabar. Okay? Clear hai yahan tak? This is your golden list of whatever you have done with isms so far. Okay? Mudaf, mudaf ilay. Tell me about mudaf. Should Light, be no al. light, No al light with followed no by al. the. Light Followed by the. With no al. with Light no. and cannot with no al mean cannot be proper. I'm trying to think before I answer you. Principally, yes, but apparently yes. But नहीं, when लेकिन al but तो when हम एक मिनट मैं complete कर लूं, Sohaib. When the mudaf ilay is proper, you anyway make the mudaf proper. Yes. Yeah. Okay. It comes Mudaf across. can be proper, but it is not proper with an al. Okay? Chain reaction. It opposite. ठीक है, light no al followed by jar. जी. अच्छा, मुदाफ मुदाफ इलैह जो होगा वो jar हो जाएगा. जी. Anything else about mudaf? It takes the property from mudaf ilay, or the status of mudaf is dictated by the status of mudaf ilay. Not the status, type. Status तो Type, jar sorry, तब होगा type. ना, status Type. तो Type It's is dictated by the mudaf ilay. ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे लिखूं, for example, Rabbul Alamin. Alamin. ठीक है? That's what I'm saying. And I ask you, what is the status of this idafa? Not the status of Rabb, not the status of Alamin. The status of idafa. रफा. The status of idafa is rafa. How do we know? उसके ऊपर वो है. Shadda, sorry. दोनों में शब्द है दुमा. What if I do this? What is the status of idafa? That's jar. So you are not even looking at Alamin and you're telling me the status of idafa looking at the first word, right? ये हमने बहुत briefly touch किया था, मुझे याद है. ये जुमला मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ. The status of an idafa is defined by the mudaf. status of the mudaf. Yes. Okay? Whatever the status of mudaf is, that is the status of the entire bucket. Idafa. Okay, idafa can be long, one after the other. Mudaf ilay can be mudaf to another. But जो आपका prime mudaf होगा, पहले वाला, that is the parent mudaf, and that is going to give you the status of the entire frame. ठीक है? नहीं, ये बात नहीं, मतलब पूरे इदाफे का स्टेटस जो है, इदाफे का स्टेटस जो होगा वो मुदाफ का स्टेटस होगा. Example. I'm just trying to create an example, okay? Baitu Baitullahi. Muslimin. Baitu Muslimi. Not Muslimin, Muslimi. Baitu Muslimi Landana. ठीक है? इसकी ट्रांसलेशन है House of a Muslim of London. ठीक है? House of Muslim is Baitu Muslimi. Muslimi Londana. Why Londana? Because London is partly flexible. Won't take the kasra. ठीक है? Muslimi Londana, Muslim of London. Now this is a chain reaction. Chain is mudaf ilay.
the status of this idafa is going to be rafa because baytu is rafa. Okay? If it was bayti, if I change it to this one, let's do it on another line. It's going to be, let's do this like this. Fi bayti muslimi Londona. Where's the noon? Londona. Okay. Now I'm saying in house of a Muslim of London. Now in this case, because of this fee, this entire idafa is going to be of type is going to be majroor because this bayti is majroor. You understand? अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ मुझे इस इदाफा का स्टेटस बताएं, then you will say majroor because Muslim is majroor. अगर मैं आपसे कहूं इस पूरे इदाफा का स्टेटस बताएं, तो you will look at the parent mudaf and then you will tell me the status. That's what this means. The status of an idafa is defined by the status of a mudaf. Clear है? खामोशी नीम रजामंदी होती है तो आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है. मुदाफ इलै, ठीक है. क्या पता है मैं मुदाफ इलै के बारे में? In jar state, Always jar. Always jar, हाँ हो सकता है, हाँ बिल्कुल. Light noel. Light with noel followed by jar. हाँ नहीं, मैं वो सोच रहा था partially flexible के लिए उसमें कसरा नहीं आती उसमें जो है, पर होता तो वो jar state ही है तो मजरूर वो. ठीक है. Always jar. Now एक पॉइंट और आपको मैं पिछले वाले उसमें बताना चाहता हूँ. Let's see if you, हमने क्लास में किया था, काफी पहले किया था. Let's talk about special mudaf. They can be special mudafs. ठीक है. Does not give you an off relationship. Doesn't give you off meaning. ठीक है. इसमें बहुत सारे पढ़े थे हमने. Let's do one of them. For example, मैं कहता हूँ example construct कर लेते हैं. बादल मौत. बादल मौत का आपने? चलो बादल मौत. बादल मौत. बादल मौती. ठीक है. This is one example. बादल मौती. एक और एग्जाम्पल बनाता हूं. मैं कहता हूं मिन कबली मिन कबली मगरिब. कबली भी स्पेशल मुदाफ ही है ना फान जी. मगरिबी. मिन कबलिल मगरिबी ये कह देते हैं. ठीक है. मिन कबलिल मगरिबी. हाँ, फ्रॉम बिफोर मगरिब. ठीक है. अब यहाँ पे जो मीन है ना, दिस इज नॉट रियली फ्रॉम. इसको आप डिफरेंट तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं. फॉरगेट द मीन, लिटरल मीनिंग ऑफ मिन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बिकॉज ऑफ दिस मिन, कबली इज jar. ठीक है. एंड देन यू हैव अल मगरिबी. दिस इज द इदाफा फ्रैगमेंट. कबली मगरिबी बेसिकली मीन्स बिफोर मगरिब. ठीक है. लेकिन देयर कैन बी अ सिनेरियो where you have min and then you have qabl, but you don't have its mudaf ilay. This is the case when you have missing mudaf ilay. हमने ये बहुत पहले किया था केस. पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं. बहुत पहले ये केस किया था. When a special mudaf loses its mudaf ilay, it is generally used to open up the thinking of the reader. अगर मैं आपको कहूँ before, तब
when did he come? He came before. Now you would be thinking before what? Before what? You might be thinking before what? If I say he came before Maghrib, then you are clear. And I just say he came before, then you would be asking questions. Before what? Allah does that in the Quran. Okay? So mudaf ilayh sometimes is taken away. So when mudaf ilayh is taken away, this particular special mudaf, whichever it is, actually gets a very, very stubborn kind of dude, and he becomes like this, takes a dhamma in protest that my mudaf ilayh is taken away. Okay? It is still fi mahalli jar, but this dhamma can show up in a special mudaf when it loses its mudaf ilayh. कुरान में आपको ये एग्जांपल्स मिलेंगी. ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक सर्च करके देखता हूँ, आपको दिखा देते हैं ये एग्जांपल्स. तंजील, तंजील, तंजील कबल check this out. ठीक है, min qablu, and there is no mudaf ilayh. So jab special mudaf loses its mudaf ilayh, it takes a dhamma in the end. It doesn't mean it becomes rafa. That dhamma is an indication of a protest this mudaf ilayh is doing. It is indicating to you my mudaf ilayh is gone. It's not given to me. You would still label min qablu as jar majroor, in which you will say this qablu is fi mahalli jar. You understand? बाद एक पॉइंट और भी ऐड कर दें इसके अंदर. अच्छा नहीं, ये ठीक है. हाँ, मुदाफ इलैह can be delayed, cannot be delayed. What do you mean delayed? नहीं, delayed नहीं, यानी long distance relationship जो है वो नहीं आती. जी, मुदाफ इलैह immediately after mudaf. Yes. ठीक है, no long distance. That's mudaf ilayh. ठीक है. Now sometimes in complex cases mudaf ilayh can be and let's not go there. मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं है तो let's not go there. It can be full sentence in itself. ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह. Right? That's mudaf and mudaf ilayh. Mawsoof and sifa. What do you know about mawsoof? Same properties होती है मौसूफ. 4 properties same match होनी चाहिए. म्यूट है अफाज भाई, बड़ी आवाज. Yes. 4 properties of mawsoof matches with 4 properties of sifa. That's the principle of mawsoof sifa. एक मिनट यार. यार मुझे 1 मिनट दे प्लीज, मुझे जरा मैं आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल के दोबारा आ रहा हूँ. ठीक है, श्योर. गिव मी अ सेकंड. रिकॉर्डिंग पॉज कर दें. पॉज नहीं होती यार वो. हाँ नहीं, ठीक है, कोई खुद जरा तमीज के दायरे में रहने की कोशिश कीजिए. अच्छा, तला भाई जरा फर्रे निकाले. हाँ सही बात है. रुके, मैं जरा अपनी
जो है ना कमीज की तरह यहाँ चेक करूं किधर किधर छुपाए हुए हैं। यार कमीज में छुपाते थे, बड़े बहादुर आदमी थे यार आप तो। ऐसे मौसूफ क्या क्या हो सकता है सर जी? मौसूफ कैन इसम, नहीं, वो तो हम इसम पढ़ रहे हैं तो वो तो पर डेफिनेटली मौसूफ इसम। कैन अफोर्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। मौसूफ कैन बी ट्रिप, लॉन्ग डिस्टेंस का था और नहीं प्रॉपर्टीज तो मौसूफ मैच कैन करनी। बी, नहीं हाँ मौसूफ सिफा का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है ना आपस में। बिल्कुल हो सकता है। और इसके अंदर वो वाली ऐसा कोई चीज थी कि मौसूफ के अंदर के वो फुली फ्लेक्सिबल नहीं और नॉन नहीं, फ्लेक्सिबल इसम, नहीं वो प्रॉपर्टीज बस प्रोनाउन मैच करनी प्रोनाउन चाहिए ना। मौसूफ नहीं हो सकता। प्रोनाउन मौसूफ नहीं हो सकते, बिल्कुल गुड। कॉमन और प्रॉपर का कुछ था कि हमेशा कॉमन होता है या प्रॉपर हो सकता है, इस तरह का था। फटे निकाल ही लेते हैं। जी जनाब, आई एम बैक। आगे साथ ही ओहो, जल्दी आ गए यार। एक तो ये बड़ा मसला होता है भाई, लोगों का जो है ना साथ ही टपक पड़ते हैं। तो यार कैसे बच्चे हो आप लोग? अच्छा जी, अच्छा जी, मौसूफ कर रहे थे हम लोग, राइट? एक मिनट, मेरा कैमरा लेट मी टर्न ऑन। हानी बेटा कहीं और बैठ जाए आप, क्योंकि यहाँ पे मैं भी क्लास ले रहा हूँ तो शोर होगा। यू कैन कम हियर लेटर और यूज हेडफोन्स इफ यू वांट। ठीक है, ओके। कैमरा नॉट वर्किंग। कैमरा नॉट वर्किंग, चलो यार उसके बगैर सरवाइव कर ले। आज कोई मसला हो गया, ठीक है। मैं भी बंद कर देता हूँ। चले, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। मौसूफ कैन अफोर्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। या मौसूफ कैन अफोर्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये तो पूरा फ्रैगमेंट के लिए ट्रू है। मौसूफ नहीं, सिफा कैन बी लॉन्ग डिस्टेंस। मौसूफ तो एक जगह पे ही होता है ना, जब भी मौसूफ आया उसके बाद सिफा जो है दैट कैन कम इन लॉन्ग डिस्टेंस आफ्टर Can't be a pronoun. Can't be a pronoun. cannot be a pronoun पॉइंटर or a पॉइंटर pointer और इसम मौसूल। जैसे मौसूल। और इसम मौसूल। गुड, नोट्स रेडी हैं आप लोगों के पास? गुड, जबरदस्त यार, बड़ी स्पीड में निकाला है आप लोगों ने सब। आई एम इम्प्रेस्ड। कैमरा बंद कर देते। ओके, ठीक हो गया। तो ये कैनॉट बी अ प्रोनाउन, कैनॉट बी अ पॉइंटर, कैनॉट बी इसम मौसूल, ठीक है। कैन बी फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, flexible or partly flexible. That doesn't stop them to operate like that. ठीक है, सही है। सिफा सिफा का हमने पढ़ा था कैन नॉट बी must match in 4 properties. कैन नॉट बी प्रॉपर पॉइंटर। मौसूफ जी, हमने सिफा का पढ़ा था ना, कैन नॉट बी प्रॉपर पॉइंटर, नॉट प्रॉपर, नहीं हाँ पॉइंटर कैन नॉट बी पॉइंटर, प्रॉपर नेम होगा वो। प्रॉपर नेम, हाँ प्रॉपर कुछ इस तरह Cannot था। be proper names, यानी तलहा cannot be a sifa of anybody और वाहद cannot be a sifa of anybody, right? It's a proper name, ठीक है। Cannot be proper names. पॉइंटर और मेरा नहीं इसम ख्याल, मेरा नहीं ख्याल हमने पॉइंटर भी कहा था। Long distance. पॉइंटर हमने कहा था ना, जिस तरह जालिकल किताब हुआ, अब दोनों ये जो है मैच करते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। तो जालिका तो हो नहीं सकता ना मौसूफ तला भाई, जालिका तो हो ही नहीं सकता।
मौसूफ। जी, प्रोनाउंस किसी की सिफा नहीं होती, राइट। लेट्स राइट पॉइंटर्स टू, अगर हमने कहा था हम लिख देते हैं। आगे कुछ केसेस आते हैं जिसमें थोड़ा सा एडवांस होता है। नेम, pronouns, pointers, all of these cannot be sifas, ठीक है। It can have long distance relationship, okay, ठीक है। If it is inflexible or partly flexible, then we apply the principle of if it can be, then it is. याद है ये? If it could be, then it is. जब आपको एक ऐसा इसम मिलता है जो कि नॉन फ्लेक्सिबल होता है and you can't match the status property and all three properties match, then you could say कि this is a sifa. ठीक है। मजरूर, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, right? Any ism with a jar status is majroor. Not Come sure after harf of jar. what can be majroor after harf of jar? Yes. What else? मुतालिक बिल खबर. Mutalik bil khabar is a harf of jar, right? Yes. मुतालिक बिल fi'l is harf of jar. Mudaf ilay is majroor, Harf of jar. Yes. right? Mudaf ilay is majroor. A sifa of a majroor mausuf, मौसूफ. right? Mausuf की spelling ये लिखी MOUSUF is also majroor, ठीक है। These cases, otherwise you don't find majroor. इन तीन केसेस में कोई इसम मजरूर होता है, चर स्टेटस। मंसूब after harf of nasab, A file is mansoob. फाइल के मफऊल, सॉरी मफूल, ये तो हमेशा मैं कंफ्यूज करता हूँ। मफूल मफऊल is मंसूब, ठीक है। मंसूब। अच्छा फाद ऊपर क्यों नहीं लिखा यार? मुतालिक बिल क्या? खबर इस मजरूर मुतालिक और बिल खबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुतालिक बिल खबर बेसिकली हर्फ ऑफ जर ही होता है ना, फ्रेगमेंट, वो राइट। पूरा फ्रेगमेंट होता है। हाँ अच्छा तो बेसिकली ये लिख दिया ना आफ्टर हर्फ ऑफ जर, जो अच्छा इसम ओके होता है। ठीक 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 ठीक। मफऊल is nasab, right? What else is nasab? When it's weak fail. Khabar of a weak fail Yes. is nasab. Sifa of a mansoob mausoof is mansoob, ठीक है। Anything else? इसम वो तो लिख दिया, हर्फ ऑफ नसब लिख दिया ना, हर्फ ऑफ नसब हमने लिख दिया। इसम में हर्फ ऑफ नसब तो नहीं आता था नफाद, ये जुमला इस्मिया में है ना, वहां पे तो रफा नहीं, मुब्तदा कैन बी हर्फ ऑफ मुब्तदा, नसब। हाँ वो ये लिखा है ना, आफ्टर हर्फ ऑफ नसब जो इसम आता है दैट कैन बी मंसूब, ठीक है। दैट कैन ये बी, लिख सकते हैं मे बी मुब्तदा कैन स्टार्ट विद हर्फ ऑफ नसब। हाँ वो तो हमने यहाँ लिखा था आई बिलीव, ऊपर। हाँ यहाँ कर चुके हैं हम लोग ये, ठीक है। ठीक है। नसब व्हेन विद हर्फ ऑफ नसब, ये वाला। अच्छा एक और पॉइंट pronoun when attached to a fi'l is always nasab, ठीक है। Pronoun when attached to a fi'l is always nasab, अच्छा nasarahu, ठीक है। because this pronoun attached to a fi'l is basically a maf'ul, ठीक है। it's a maf'ul bihi if you remember,
ठीक है, so he helped him. This him is this pronoun. It's a detail. Basically यहाँ पे मैं mention कर दिया है मफूल, इसमें cover हो जाता है, but I'm explicitly identifying यहाँ पे इसको as a pronoun. ठीक है? अच्छा फाद, एक बात पूछूं कि यहाँ पे जी। जो प्रोनाउन अटैच प्रोनाउन होता है उसमें हु भी होता है और ही भी होता है ना, एज एन अटैच वन। जी तो वो नसब और जर दोनों स्टेट में हो सकते हैं ना, ठीक है ना, जी इन जी नसब स्टेट इट कैन बी ही एज वेल, तो नसरा ही भी हो जी सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है. That is driven by which haraka is before. If it is kasra or a ya, letter ya, then you use he. Anything else you use who. हाँ पढ़ा था बिल्कुल। ठीक है हाँ बिल्कुल पता हो, तो दम्मा के लिए दम्मा था और जी कसरा और ठीक है. Ism mausul not learned yet. Ustad just keeps on saying उस्ताद we उस्ताद will की do बिल्डिंग। it, but we never do it. ठीक है. We will mausool it afterwards. Mausul it afterwards. Fa'il. What can be fa'il? प्रॉपर नाउन, नो सॉरी, प्रॉपर Proper noun? रफा, फाइल Yes. इज Always फाइल इज ऑलवेज रफा। after and rafa. यस Yeah, यस always after and rafa. ठीक है. Can be flexible, non-flexible, or partly flexible. बाद ऑलवेज आफ्टर क्या है, एक दफा मुझे कोई एग्जांपल दो, ऑलवेज आफ्टर क्यों? That was one case. हाँ यही मैं कह रहा Can हूँ। be inside fi'l एग्जैक्टली as एग्जैक्टली, a हाँ pronoun. समझ गया। व्हेन इट्स ठीक है. रफा देन इट्स एक्सटर्नल डूअर। जी. So example here, nasara. मोहम्मदन। एक तो example है nasara Muhammadan. ठीक है. You can have another example, nasara Isa. Isa. Like this. That's non-flexible case. You can have nasara Ibrahimu. ठीक है. नहीं नहीं, वो मैं इसीलिए मैं सिर्फ कंफ्यूज हुआ था, ऑलवेज That is आफ्टर। a partly flexible case. ठीक है. यस। Anything is possible. Okay. All of this is ism. Okay. Fa'il हो गया. Maf'ul. ऑलवेज इन नसब। Always nasab. ठीक है. Mainly shows up in jumla fi'liya. Yeah. That's where it shows up. Maf'ul. Basically. ठीक है. In case क्या ये यहाँ पे लिखूं, चलो लिख देता हूँ. In case of kana, sorry, weak fails, the ism in nasab is not considered a maf'ul. ठीक है. Rather they are considered a khabar. Everyone with me on this one? ठीक है. इट्स कंसीडर्ड एज खबर बिकॉज़ वी ट्रीट वीक हाँ, क्योंकि फेल्स जो एज weak जुमला इस्मिया।
Correct. That's why. Right? एक बहुत सटल पॉइंट हमने बहुत पहले देखा था, स्पेशल मुदाफ्स जितने भी हमने देखे थे आर जनरली इन नस्ब, because special mudafs cannot become doers. For example, fawqa means above, ba'da means after, qabla means before. These things cannot become a doer. और डूअर ठीक है? हमने जो पहली डेफिनेशन पढ़ी थी वो रफा थी, इस वजह से जी, वो रफा। अच्छा, are generally nasab because they cannot act like a doer. Okay, that's why they are as standard in nasab. What else? Special mudafs. इसका क्या लिखूं मैं? बल्कि इसको तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए था ना, इस पॉइंट को. ठीक है. Used in idafa fragment, special mudafs, and do not give off meaning. ठीक है. In jumla ismiya, the idafa with special mudaf of time and place, which is called zarf, is MBK, muta'alliq bil khabar. With me? In jumla fi'liya, the idafa with special mudaf is maf'ul. With me on this? जी जुमला फेल दफा विद स्पेशल मुदाफ इज विद। ठीक है। Okay. When they lose, फहद सिर्फ एक चीज की, उसके अंदर जो इदाफा विद स्पेशल मुदाफ टाइम एंड प्लेस जो जुमला इसमिया के अंदर इज एमबीके। जी जी, कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम एंड प्लेस नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, कुल्ला. कुल्ला मीन एवरीथिंग, ईच. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अय्यू, अय्यू मीन्स विच. ठीक है. अब they are not representing any time and place, unlike you have ba'da. Ba'da means after, this is a time. ठीक है. Hawla, hawla means surrounding, this is place. Right? कुछ ऐसे होते हैं जो कि टाइम एंड स्पेस को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनके साथ एमबीके नहीं बनता. ओनली द वंस दैट डू टाइम एंड प्लेस, उनके साथ एमबीके होता है. ठीक है. ओके. ये हो गया एमबीके. ठीक है. When they lose mudaf ilay, what happens? They take dhamma. दम्मा। Okay, they take dhamma. Pointers, there are 14. ठीक है. Independent ones. I believe there are 21 or 20. I don't remember. 20 or 21.
dependent ones. Always proper. Do not go by ending sound or ending combination principle. ठीक है? That's pronouns. Oh, sorry. This is not this. मैंने pronoun के अंदर वो लिख दिया है. Wait a second. All of this is pronouns. Pointer के अंदर लिख दिया है. Pointers. Pronouns. Sorry. अब now pointers. Always proper. Proper. And default is rafa. ठीक है? Singulars and plurals are non-flexible. Duals are like Muslim chart. Hazani, hazaini, hazaini. Hatani, hataini, hataini. और पॉइंटर्स में दो हमने पढ़े थे, एक बिल्कुल नियर फ्यूचर होता है और एक जी. Two types. Near, far. यस ठीक है? हाजा, हाजा and friends. ठीक है? And this one is zalika. तिलका क्या था? Tilka is feminine of zalika. Feminine. Zalika and friends. ये फार है. ठीक है? और इसमें ये भी लिख सकते can be feminine and masculine, have masculine and feminine both. Well, that goes for ism anyway, right? ये भी बात है. That goes for any ism. 4 properties. ठीक है? ठीक है? Does that help everyone? A lot. A lot. Ism. Recap. ठीक है? I will share that with you. Next class में यही काम हम करेंगे fails के साथ. ठीक है? In detail. Before we start to move on further. हर चीज. कोई चीज अगर आपको इसमें आइडेंटिफाई करे नोट्स देखते हुए कि हमने मिस कर दी है, प्लीज ब्रिंग इट इन. मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा. आपको पता है ग्रुप के ऊपर लिंक है शेयर ड्राइव का. ये सारी चीजें मैं वहां पे रखता हूँ इन एनी केस. आपके साथ चाहे मैंने ग्रुप पे शेयर की हो, दे आर नॉर्मली देयर इन केस यू लूज देम. ठीक है? सही है? जज़ाकल्लाह फहद भाई. गो थ्रू देम. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फेल के साथ यही स्टोरी करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं आगे कैसे बढ़ना है. सही है? हमने हाँ बस आखिरी चीज मेरे ख्याल से हमने लाइट और लाइटेस्ट वाली चीजें नहीं की बस. हाँ, ये बात भी सही और है. हमने कमांडिंग भी और फॉरबिडिंग और वो वाली भी. वो फेल में वो आएगी. fail के लेकिन लाइट एंड लाइटेस्ट आर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. लाइट वर्सेस लाइटेस्ट isms. ठीक है? लाइटेस्ट तो नहीं था ism, लाइट था सिर्फ. लाइटेस्ट ism is always light. प्रेजेंट के अंदर. अच्छा, Light and ism heavy can only होगा. be light, not lightest. Light and heavy होती. जी. So light ism, इसको इस तरह कर देते हैं, लाइट वर्सेस हैवी वर्सेस हैवी ism. ठीक है? डिफॉल्ट is heavy. Heavy means having a noon sound. Sound either via ending combination or ending sound. ठीक है? Muslimun is having a noon sound. Muslimani having a noon sound.
Muslimuna having a noon sound. ठीक है? Light is all about getting rid of the noon sound. ठीक है? Muslimu, single accent. Muslima, noon gone. Muslimu, noon gone. Fahad, ism is made light for what reason? When it's चार reasons. चार थे, है ना? Negation. When There you are four reasons when an ism is made light. What's the first one? Idafa. Mudaf. Not Mudaf. idafa. Mudaf. Calling someone. Calling someone. ठीक है? या Musa. Absolutely. Categorical Negation. Negation and partly flexible. Right? When ism is partly flexible. बस मेरे ख्याल से ये और हो गया। इसमें वो भी होगा ना अल वाला के अगर जी इसमें फिर हैवी का कांसेप्ट ही and ism with an al is not considered light or heavy. के इसके कुछ principles लिखते हैं. Al does not appreciate tanween. Tanween, double accent. Tanween means this. Yeah. Okay. Double fathatain. So when the al shows up on an ism, the tanween changes into a single accent. Okay? Yes. Therefore, that ism is not having a इसको मैं कैसे therefore that ism is not देखो considered as light. the noon sound noon sound of that ism is not gone because it was made light. Right. It's gone because of al. Because of the al. Okay? That is why such isms are not considered light or heavy. The principle does not apply on them. ठीक है? Yes. Yeah, al बस ठीक कर लेना. Al अच्छा. कुछ अल्लाह हो गया. ठीक है? Yes. 4 पेज के नोट्स है भाइयों ये. ठीक है? माशाल्लाह बहुत पढ़ लिया हमने. आप देखें किधर पहुंचे हुए आप लोग. सही है. अब मैं आपको सिर्फ एक चीज और दिखाना चाहता हूं, देन आई विल क्लोज द क्लास. सही है. आज सोच के आया था मैं दिखाऊंगा. वेट अ सेकंड. फोटोज. आई होप आई फाइंड दैट फोटो. यस. अच्छा दोस्तों ये चेक करें यार. नाउ दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ वन ऑफ माय क्लासेस. ठीक है, जो मैं क्लासेस कर रहा हूं और रिवाइज कर रहा हूं चीजें कुछ. ठीक है, इस क्लास के अंदर दिस सिस्टर शोज अप. ठीक है, शी शोज अप एंड वी आर डूइंग दिस आया एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ठीक है, सारा 1 घंटे की क्लास के बाद इस सिस्टर ने कहा कि उस्ताद आई हैव अ प्रॉब्लम. मैंने कहा जी क्या प्रॉब्लम है? जो हमारा ये प्रोग्राम है इसके अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है रीडर, विच इज वेयर आई वांट टू टेक यू गाइस. मैं आपको जरा सा बताना चाह रहा हूं ताकि आपको पता हो वेयर
I'm trying to take you. ठीक है, give me 1 second. आपको उससे अंदाजा हो जाएगा. You need to know where you're heading. ठीक है. Now, yes, sister I, and she says that I have a problem with the reader. Now, this is the reader. If you see my screen. ठीक है. Now, this is the reader. When you do this, inshallah, we will do it one day. You will be reading Arabic. मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ऐसे. Inshallah. कोई पैराग्राफ मिल जाए मुझे. Like this. If I ask you to read this, ठीक है? And I ask you, would it be man or min? If I ask you, huwal ustaz, ustaz का हरका क्या होगा? Can you try to read this? Huwal ustazu, ustaza, ustazi, what is it? Yeah, so that is the level we will inshallah go to at one point. Okay, so this is the reader. This is reading Arabic without harakas. So yeah. Now all of a sudden this sister shows up and she says, I have a problem with the reader. And the Ustad says, what's the problem? She says, I can't see very well. I'm partially blind. Okay? I'm partially blind and I am looking for the version of the reader in Braille. Okay? When she said that, I was like, yeah, how did she ended up to the point where she is actually starting the reader? The entire journey she has taken, जो हम अभी कर रहे हैं, from the very basics of 3 types of words all the way to the point where she is now considering starting the reader exercise, reading Arabic without harakas. वो सारा journey कैसे इन्होंने पास की है? How has she done it? I mean, what level of commitment, motivation, determination you need to reach that level when you are partially blind? सोचे यार कैसे किया होगा? Wow. When I heard that, I said, यार, oh my God, जब आखिरत आएगी ना, we are standing next to these people in competition with what floor in Jannah you want to get. Really, think about it. These are your competitors, and with these people you should actually compete. We all should compete. मैंने जब ये सुना, मैंने कहा यार next class में मैं बता रहा हूँ ये दोस्तों को. I'm telling everybody. And now Ustad has taken an action to actually find somebody who can do the read in Braille. That is the level of commitment people have here. It inspired me so much. I thought I should share that with you. Okay? In this class. क्योंकि हम सबको ना थोड़ी बहुत motivation, inspiration चाहिए होती है. Always. It's always the case कि आपके ना heart and mind थोड़ा सा downsize कर जाता है. Sometimes you go down the drain. You don't feel motivated. It's human nature. मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है. लेकिन जब इस तरह की स्टोरी सामने आती है ना, तो इंसान एक सेल्फ चेक के अंदर चला जाता है कि where do I stand? I personally went in there. और उसके साथ आप ये देखो यार, ये बच्चा 11 साल का बच्चा है ये. He is my classmate. Just imagine. 11 साल का बच्चा है ये. साद नाम है इसका. ठीक है. Chalo, I just wanted to share this story with you guys. Inshallah, I hope the class today helped you. और मैं notes आपके साथ ये share कर दूंगा. Go through them. और let's not forget कि हम किस journey पे हैं. Difficult or easy, आप आगे हैं, पीछे हैं, struggle कर रहे हैं. Doesn't really matter यार. Allah Ta'ala is looking for the effort. So we are a group of friends. We can always go back as much as we want. We can always go in advance as much as we want. It's our class. ठीक है? We can always do that whenever we want. ठीक है? चलें जी. Inshallah, I'll share the notes with you and also put it on the drive. तो next class में fail करेंगे इसी तरह से. सही है? चलें जी. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum.
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।